morning, students. Welcome back to your physics online class. Students, in the last tutorial we have discussed about the error, types of error also, and now today we will see how to eliminate or minimize the errors. Okay. In the last tutorial we have seen the main difference between the random error and the systematic error. I have told you the random error cannot be eliminated from your measured value, but the systematic error you can remove it. You can eliminate the systematic error from your measured value. Okay, so today we will see the method to minimize the random error. Let's see here. Method to minimize the random error. See the topic, today's first topic, method to minimize the random error. How to minimize the random error from your measurement. What is random error? I am repeating again. Random error means the type of error which occurs in your measurement randomly. So see here, we are going to discuss here how to minimize the random error from your measurement. Okay, so there is a normal law. I am repeating again, there is a normal law of random error which says that ki occurrence of positive error and negative error both are same. In the random error, suppose you are performing an experiment to get the value of quantity A, and suppose there are 10 observations you are taking. You have suppose taken 10 observations. So the law says that, which law? Normal law of random error says that out of 10 observations, the 5 will be towards the positive direction and 5 will be towards the negative direction. बताया मैंने ना कि रैंडम एरर में पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर दोनों होगी एंड बोथ हैव सेम प्रोबेबिलिटी. जितना चांस पॉजिटिव एरर आने का है उतना ही प्रोबेबिलिटी नेगेटिव एरर आने की भी है. सो ये एक नॉर्मल लॉ बता दिया गया, नॉर्मल लॉ ऑफ रैंडम एरर, कि आउट ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, सपोज देयर आर ऑब्जर्वेशंस 10 in an experiment. So out of 10, the first will be towards positive direction and the rest of 5 will be towards the negative direction. ये लॉ है. अब इस लॉ का यूज करते हुए ये बोला गया कि we can minimize the random error. We can, I think this portion is shining. Okay, we will not use this portion. Listen. तो using this law, we can minimize the random error from your measurement by taking the arithmetic mean of the observations. ठीक है? You can understand कि out of 10, 5 towards positive, 5 towards the negative. So दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? We should take the mean of all that values. Okay. So this is the method. Suppose the observations are A1, A2, A3, A1, A2, A3 dot AN. These are the observations. How many observations are there? N observations. So the arithmetic mean is given by A bar and it is equals to A1 plus A2 plus A3 plus dot plus AN divided by n. So this is the arithmetic mean. Arithmetic mean या average, you know that, also known as average. So this is the average या arithmetic mean of the observations. So ये बोल रहा है कि this will be very close to the true value. ये A बार जो आया हुआ है arithmetic mean, this will be very close to the true value, means actual value of the quantity A. ठीक है? So this A bar
is also known as, means we can represent this a bar as true value. जब भी ट्रू वैल्यू की बात आएगी तो वी कैन यूज दिस ए बार, अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट. किसी ये सब किया क्यों गया? एक फिजिकल क्वांटिटी ए के मेजरमेंट में, और ए के मेजरमेंट में कितने ऑब्जर्वेशंस हुए? एन ऑब्जर्वेशंस, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज है. अब कह रहा है उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू किसके इक्वल होगी? मीन्स ए जो है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? बाय टेकिंग द अरिथमेटिक मीन, या उसे बोलते हैं एवरेज. ओके, तो दिस इज द मेथड. क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज द मेथड टू रिड्यूस या टू मिनिमाइज द रैंडम एरर फ्रॉम योर मेजरमेंट. सो दिस इज द आंसर, बाय टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस. वन मोर स्टेटमेंट यू कैन से कि we should take a number of multiple observations in an experiment. जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगे रैंडम एरर उतनी ही रिड्यूस होगी, मिनिमाइज होगी. रिपीटिंग अगेन, मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस you are observing in an experiment, it will reduce the random error from your measured value. Okay, so यही मेथड हो गया. ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लीजिए और उनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, सो यू कैन मिनिमाइज द रैंडम एरर. ओके, दैट्स इट. नाउ सी some more types of error are there. Let's say like absolute error. Absolute error. Let's see what is absolute error. Students, suppose in an experiment in which you are observing the quantity A, but the observations are A1, A2, A3 dot 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 AN, and its true value, बताया मैंने, true value is represented by A bar. True value किसे represent करेंगे? A bar से. So the difference of true value and individual observations, true value and different या individual observations, A bar minus A1 or represented by delta A1. Similarly, delta A2 equals to A bar minus A2. Similarly, delta A3 equals to A bar minus A3. So these are the absolute errors. These are the absolute errors in our measurement. Repeating, what is the absolute error? तो कहेंगे absolute error is the difference of true value and individual observations in our measurement. Similarly, also you can write delta AN equals to A bar minus AN. These are absolute errors. Okay. Next is the final absolute error. Final absolute error. Final absolute error, also known as mean absolute error. Now let's see what is final absolute error. Students, final absolute error is represented by delta A bar. This is delta A bar, and it is equal to, देखो, delta A1 in mod plus delta A2 mod plus delta A3 mod plus dot 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 plus delta AN mod divided by n. This is delta A bar. Here delta A bar, what is delta A bar? Delta A bar is the final absolute error. Delta A1, what is delta A1? Delta A1 is the difference of true value and first observation. Delta A2 is the difference of
true value and second observation. Delta A3 is the difference of true value and the third observation. Similarly dot 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 delta AN. And ये जो mod लगा दिया, mod लगाने का मतलब difference, we are taking here the difference in positive only. We are taking the difference in positive also. हो सकता है कि ये difference जो है, ये difference आया हो negative में, तो difference negative में लेना है इन पॉजिटिव ओनली. यहाँ भी पॉजिटिव लेने के लिए मॉड साइन यूज किया गया है. एंड डिवाइडेड बाई एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब वो फाइनली दिस डेल्टा ए बार जिसे बोल रहा है फाइनल एब्सोल्यूट एरर, दिस इज द मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन, यू कैन से अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल पॉजिटिव एब्सोल्यूट एरर्स. जानते हैं ना, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स हैं. तो उन एब्सोल्यूट एरर्स का पॉजिटिव वैल्यू का अर्थमेटिक मीन ही कहलाएगा फाइनल एब्सोल्यूट एरर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर. Students, you should mind all the types of error we are discussing here, because जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में मिलेंगे all will be based on all these types. So किसी भी टाइप ऑफ एरर को इसे आपको इग्नोर नहीं करना है, सबको अच्छे से with symbol you have to understand. So these are now see the relative error. What is relative error? It is represented by delta A. Represented by delta A. This is also symbol delta, small delta. इसे बोलते हैं small delta. एक ये डेल्टा जानते हो, दिस इज डेल्टा 1 डेल्टा एंड दिस इज स्मॉल डेल्टा. नाउ सी व्हाट इज रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ए एंड इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार. सी दिस इज द रिलेटिव एरर. क्या है रिलेटिव एरर? डेल्टा ए बार. व्हाट इज डेल्टा ए बार? अभी पीछे पड़ा हुआ है. डेल्टा ए बार इज द फाइनल एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर. और व्हाट इज ए बार? दिस इज द ट्रू वैल्यू. सो रेशियो ऑफ दीज टू, रेशियो ऑफ दीज टू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर. ओके, नाउ सी वन मोर. There is a percentage error. Percentage error. This is one of the frequently asking question in exam. This is the one of the topic which is asking in your examination frequently. ठीक है? So listen carefully. Percentage error. It is the रिलेटिव एरर रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज. इसका मतलब हुआ डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद 100. सो दिस इज द मेथड टू गेट द परसेंटेज एरर. कैसे परसेंटेज एरर निकलेगा? दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दोनों के रेशियो को कहते हैं आप रिलेटिव एरर. इस रिलेटिव एरर को जब परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया गया, दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर. So these are the types of error which we have to face during the numerical problem. Okay, now see next topic, that is the combination of errors. Combination of errors. Combination of errors का मतलब हो गया, suppose we have an expression in which there are two or more quantities. So how to get the total error in the final expression. या देखो एग्जांपल समझो. Suppose the expression is x equals to a plus b or y equals to a minus b
या z इक्वल्स टू a इंटू बी, या सपोज p इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b, या q equals to suppose 8 power n, this type. Or also suppose one more we have to face the problem like suppose r equals to 8 power x b power y divided by c power z. So let's see here, we have to discuss the combination of errors. See here, x equals to if a plus b, that is the sum of two quantities. अगर a और b दोनों में एरर होती है तो x में फाइनल एरर क्या होगी? Similarly, if you have the error in a and b and we have to find the error in this final result y, that is the difference of a and b. Similarly, in product, division, power, and this is the general rule. Finally, we have to find the error in the results. Results मतलब like in x, y, z, p, q, r. इन सब में परसेंटेज एरर कितनी होगी या एरर कितनी होगी when we have the error in the given quantities like a and b and c also in this last. Okay, so let's see one by one. Let's see one by one. The first is sum of, या कह दो error in the sum. Error in the sum of two quantities. Error in the sum of two quantities. For example, you have two quantities a and b, and the sum of these two gives you suppose the value z. Actually means the true values are using a and b. दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है a and b, और अगर ट्रू वैल्यू यूज किया है, एक्चुअल वैल्यू यूज किया है, सो दिस विल बी एक्चुअल रिजल्ट z. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. बट यू नो दैट व्हेन you are performing an experiment to get the value of a and b, so obviously you will get the different values from its actual value, so that the observed value of a and b are represented by, कैसे, तो कहेंगे a plus minus delta a and b plus minus delta b. ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में समझाया हुआ है. दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द मेजर्ड वैल्यू. a जब मेजर किया गया होगा तो दिस इज a plus minus delta a, where delta is the absolute error in the first quantity, delta b is the absolute error in the second quantity b, and now these are the measured value. अब इन measured value को जब ऐड किया गया, सो क्या आपको z मिलेगा? नहीं. जब a और b में एरर होगी तो फाइनली z में भी एरर होगी, and the error in z represented by z plus minus delta z. Okay, now see, z plus minus delta z equals to now opening this bracket and separating the terms, we can express this one as a plus b. a और b को सेपरेट कर लिया, and now plus minus delta a plus delta b. Now see, from equation number 1, z equals to a plus b. Z is equal to a plus b, so from left side z and right side a plus b both are equal to each other, so we can cancel out these two. Finally we have plus minus delta z equals to plus minus delta a plus delta b. Now the maximum possible error, maximum means in positive we can take the maximum possible error in the sum of two quantities is represented by delta z, and it is equal to delta a plus delta b. This is our answer. This is our result. क्या result मिला? Delta z equals to delta a plus delta b. Delta z is the
error in the result, या कह दो error in the sum of two quantities. Delta A is the absolute error in the first quantity, delta B is the absolute error in the second quantity. Okay, तो this is the sum of two quantities. जब भी दो quantities पता होंगी आपको और उनके absolute error दिए हुए हैं, तो we can add both to get the error in the sum of two quantities. See here the example. Suppose two quantities, measured quantities, are represented by 2 plus minus 0.1 centimeter, and second quantity is, suppose this is first quantity and second quantity is 7 plus minus 0.2 centimeter. These are the two measured value and we have to find the sum of these two. ठीक है, तो sum will be, sum equals to 7 plus 2, this will be 9 and plus minus 0.3. This is the sum. How to represent the sum of these two measured value? This is the method. जो true values हैं उन्हें separate ऐड करो and जो absolute errors हैं उन्हें separate ऐड करो. And now what is delta z? Suppose this is z, this is ये फर्स्ट क्वांटिटी है जिसे आप कह सकते हो a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड दिस इज b प्लस माइनस डेल्टा b. And now sum is z plus minus delta z. And now see what is delta z? Delta z means the error in the sum of two quantities. This is 0.3 centimeter. Okay, easy है. Now see the difference. Error in the difference. Error in the difference of two quantities. ध्यान से देखो. Again we have the quantities a and b. Suppose a and b, and we are getting the difference of these two, that is z, equation number 1. And the measured values are again a plus minus delta a and b plus minus delta b, and difference of these two will be z plus minus delta z. जो लास्ट किया है उसी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द डिफरेंस ऑल्सो. नाउ सी z plus minus delta z equals to, again separating the terms, a minus b. When minus goes in this bracket, b becomes minus b, and when minus goes with plus minus delta b, it will show no change because माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस, माइनस का माइनस से होगा प्लस, मतलब यहाँ पे फिर से प्लस माइनस दोनों मिल जानी है. सो फाइनली प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ठीक है. नाउ सी अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, a minus b equals to z, so we can cancel both. Finally plus minus delta z equals to plus minus delta a plus delta b. Again you can express the maximum possible error in the difference of two quantities is delta z equals to delta a plus delta b. It means चाहे सम निकाल रहे हो चाहे माइनस डिफरेंस निकाल रहे हो, the error in the result will be equals to the sum of individual errors in individual absolute errors in the quantities. पहली क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर कितना है, दूसरी क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर कितना है, दोनों का सम किसके इक्वल होगा? द एरर इन द सम एंड डिफरेंस बोथ. ठीक है ना. ये तो ये डिफरेंस के लिए था. नाउ सी द नेक्स्ट, दैट इज इन प्रोडक्ट. Error in the product of two quantities. See here, suppose the first quantity is a, second is b,
and we are getting the difference of these two, that is z. ए और बी दो एक्चुअल क्वांटिटीज हैं जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, z के इक्वल आ रहा है. प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज वो क्या होंगी, ऑब्जर्व्ड मींस मेजर्ड वैल्यूज क्या होंगी, a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b. दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो भी z के इक्वल नहीं होगा. इट विल हैव एरर दैट इज डेल्टा z. सो फाइनली वी कैन एक्सप्रेस z plus minus delta z equals to a plus minus delta a, b plus minus delta b. Now see, we can take the common a from the first bracket and b from the second bracket. a से a जब कॉमन लिया फर्स्ट ब्रैकेट से, so this is a and 1 plus minus delta a by a. Similarly b यहाँ से निकाल लिया, so this will be 1 plus minus delta b by b. Okay, और a b bracket 1 plus minus delta a by a and 1 plus minus delta b by b. Okay, so what is the left side? Left side से भी ऐसा करते हैं, we can take the common z. z कॉमन ले लिया तो this is 1 plus minus delta z by z. Okay, so from equation number 1 it says that a into b equals to z. a into b or z both are equal, so we can cancel. So finally 1 plus minus delta z by z equals to प्रोडक्ट करो दोनों का, so this will be 1 plus minus delta a by a. ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, so 1 plus minus delta by a, and ये क्वांटिटी जब डेल्टा b by b से मल्टीप्लाई होगी, we are applying the distribution law generally, so this will be equals to 1 this is plus minus delta b by b and plus minus delta a by a delta b by b. देखो distribution law लगा दिया. Okay, now see, 1 in left side, 1 in right side, cancel. Again next step क्या कर सकते हैं? Now see this quantity about this delta a by a into delta b by b. Delta a by a is a smaller quantity. Small quantity. Delta b by b is also a small quantity, and the product of two small quantities will give you very smaller quantity. So a smaller quantity को we can neglect here. We are neglecting this smaller quantity. लिख देना यहाँ पे neglecting this smaller quantity. So finally we have plus minus delta z by z equals to delta a by a plus minus delta a by a plus delta b by b. Okay, see, या मैक्सिमम, अब देखो मैक्सिमम एरर बोलेंगे तो वी शुड अवॉइड द माइनस, जस्ट वी हैव टू एक्सप्रेस इन पॉजिटिव ओनली. So this is delta z by z equals to delta a by a plus delta b by b. This is the result for product. When we have the we are getting the product of two quantities a and b, and their relative errors are delta a by a and delta b by b. लिख लेना, delta a by a is the relative error. This is the relative error in first quantity. Delta b by b is called relative error in the second quantity. और दोनों का सम क्या है? It is equals to the fractional error. Relative error or fractional error in the result, that is z. Repeating, you can write the answer. You can write the result as कि the fractional error. सुन लेना, fractional error and relative error both are equal. तो fractional error in the product of two quantities, this is the left side, is equal to
the sum of fractional error in the first quantity and the second quantity. That's it. प्रोडक्ट के फ्रैक्शनल एरर के इक्वल किसके इक्वल होगा? दोनों क्वांटिटीज के फ्रैक्शनल एरर के सम के इक्वल. तो दिस इज द रिजल्ट. अब इसी फ्रैक्शनल एरर को वी कैन एक्सप्रेस, या रिलेटिव एरर को वी कैन एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑल्सो. सो वन मोर एक्सप्रेशन यू शुड राइट, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100% इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100. ठीक है ना? अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों फ्रैक्शंस में, दोनों फ्रैक्शनल एरर्स में, सो वी विल हैव द परसेंटेज एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज. सो फ्रैक्शनल या रिलेटिव निकाल लोगे तो परसेंटेज एरर निकालना इजी है जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 100. नाउ सी द लास्ट वन, दैट इज इन डिवीजन. एरर in division. Again we have quantities A and B and their ratio, you can say the Z. Suppose Z equals to A by B. Z equals to A upon B. A and B are the actual value, a true value of the quantities, and the Z will be quotient of A upon B. Quotient of A upon B. Okay, now by measurement you will get A plus minus delta A, और B की जगह पे क्या मिल जाएगा मेजरमेंट में? B plus minus delta B, and the ratio of these two, या क्वोशंट कह सकते हो, क्वोशंट ऑफ दिस रेशियो डिवीजन इज एक्सप्रेस्ड बाय z प्लस माइनस डेल्टा z. और यू कैन टेक कॉमन a फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड b फ्रॉम द डिनोमिनेटर. क्या मिलेगा? देखो, a ले लिया न्यूमरेटर से, b ले लिया डिनोमिनेटर से. ऑल्सो z फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सो दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z. सो इन न्यूमरेटर में क्या मिला? 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी. ओके, नाउ सी अगेन a by b and z cancel out each other because of equation number 1. And now see 1 plus minus delta z by z equals to, you can send this denominator in numerator. कैसे? by reversing the exponent. By default exponent is 1, and when it goes in numerator then the exponent becomes minus 1. So finally 1 plus minus delta a by a into 1 plus minus delta b by b, और exponent क्या हो गया? minus 1. ठीक है? Now see here, 1 plus minus delta b by b to the power minus 1. So for solving this expression we have, means last expression, I'm saying that last expression 1 plus minus delta b by b to the power minus 1, इस लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं by using the binomial theorem. There is a theorem in mathematics, binomial theorem, which says that 1 plus x to the power n equals to 1 plus nx when x is 2 less than 1. ये binomial theorem है. In the binomial expansion there is a specific law या theorem which says that 1 plus x to the power n equals to 1 plus nx. Just we have multiplied the exponent with the x. कब ये possible कब है? When x is, this term should be very smaller than 1. This is the symbol too small.
x too small than 1. So now see here delta b by b, delta b by b is the smaller quantity, because delta b and b ratio will give you the value very smaller than 1. The value will be very smaller than 1. So we can apply the binomial theorem here. So finally क्या मिलेगा देखो, when we apply the binomial theorem here, so this is the n and this is the x. जब -1 जो है इस टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, सो -1 मीन्स प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया. सो फाइनली अगेन देयर विल बी नो चेंज. भाई प्लस यहाँ होना चाहिए, प्लस माइनस दोनों साइन है, और माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो जस्ट इट रिवर्सेस द सिंबल, माइनस एंड प्लस. सो फाइनली देयर विल बी नो चेंज. By applying the binomial theorem, finally we have 1 plus minus delta z by z equals to 1 plus minus delta a by a and 1 plus minus delta b by b. बाइनोमियल थ्योरम से ये एक्सपोनेंट जो है एडजस्ट हो गया. चलो प्रोडक्ट करें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से. क्या मिला? 1 प्लस माइनस डेल्टा a by a प्लस 1 सॉरी ये क्या आगे सिंपल हो गया. नाउ डेल्टा a by a and multiplied by delta b by b plus delta b by b. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ब्रेक कर लिया इसे. So see here, this should be plus minus, here also plus minus. So see here 1 plus minus delta z by z, 1 cancel, 1 cancel, क्या बचा? And now again see this term, delta a by a small quantity, delta b by b small quantity. So product of these two will give you the very smaller quantity. So इसे ignore कर दिया means neglect कर दिया. So finally we have delta z by z equals to delta a by a plus minus here and delta b by b plus minus. So again by taking the maximum possible fractional error in the division of two quantities, या quotient of a division is equal to delta z by z equals to delta a by a plus delta b by b. क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट says that the fractional error in the quotient of two quantities, quotient of division of two quantities is equal to the sum of fractional error in first quantity and fractional error in the second quantity. जो प्रोडक्ट में रिजल्ट आया है वही आपको यहाँ पे डिवीजन में रिजल्ट मिला हुआ है. एंड अगेन फॉर एक्सप्रेसिंग इट इन द परसेंटेज जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई द 100 विद दीज टू टर्म्स. अगर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मीन्स यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, इन फ्रैक्शन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर दोनों में, सो फाइनली वी विल गेट द डेल्टा मीन्स percentage error in the quotient of division of two quantities. Okay, so इतना करो पहले, इतना नोट्स बनाओ. तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास, है ना. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वी विल सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑल दीज रूल्स. जो रूल्स हमने पढ़ा हुआ है सम के लिए, डिफरेंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, डिवीजन के लिए, इन सब पे बेस्ड. और एक और अभी लॉ चेक करना है हमें, रूल चेक करना है फॉर एक्सपोनेंट, एंड वन मोर इज देयर जनरल रूल. तो इन सब को कल मीन्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करके वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर. सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू. कीप्स लर्निंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू वेरी मच.